Now see, today's topic is area part 3. Okay. Now see question number 1. The length of a side of rhombus is 4.1 centimeter and one of the diagonal is 1.8 centimeter. Find the area of rhombus. First, tell me what is mean by rhombus. Rhombus means if all four sides of quadrilateral are congruent, then that quadrilateral is called as rhombus. Okay, suppose this all sides are congruent, then that is rhombus. And you know that diagonal of rhombus bisect each other at right angles. ये एंगल क्या रहता है? राइट एंगल रहता है. ठीक है. Now see your diagonals of rhombus bisect each other at right angle. Therefore this angle is 90 degree. Okay. This side is given 4.1. Therefore this side BC is also how much? 4.1. Is it right? Now see, this diagonal BD is given. Diagonal BD is how much? Diagonal BD is 1.8 centimeter. Okay, 1.8 centimeter. Therefore BO is equals to bisect means टू पार्ट. बायसेक्टचा अर्थ काय होतो? दोन भाग करतात. बरोबर. मग BO किती येणार? हाफ ऑफ BD. BO इज हाफ ऑफ BD. दॅट इज हाफ इंटू 1.8. ओके. अँड 2 1 जा 2 9 जा. That is your answer is 0.9. This BO is 0.9. Is it right? This BO 0.9 centimeter. Now here in this right angle triangle BOC, this BC is 4.1, BO is 0.9. Then we have to find out OC. This angle is 90 degree and therefore we have to use here Pythagoras triplet or Pythagoras theorem. You know Pythagoras triplet is 9 40 41. और another method, दुसरी मेथड मी काय सांगितली आहे? ऑड नंबर असेल, 9 हा ऑड नंबर आहे ना, मग ऑड नंबर असेल तर काय करायचं? काय सांगितलं होतं आठवतंय? ऑड नंबर टू द होल स्क्वेअर. ओके, ऑड नंबर टू द होल स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस मायनस 1 हे पायथागोरस ट्रिपलेट असतं ऑड नंबर असेल कोणता तर. आता ऑड नंबर कोणता आहे बघा? 0.9. आपण तिथे 9 पकडूया. ठीक आहे. 9 स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस मायनस 1. 9 स्क्वेअर इज 81. ओके, 81 प्लस 1 अपॉन 2 आणि काय येणार? 81 मायनस 1 अपॉन 2. बरोबर. 81 प्लस 1 किती येतं? 81 प्लस 1 82 अपॉन 2 आणि 80 अपॉन 2. 80 अपॉन 2 म्हणजे किती येणार? 40. बरोबर. आणि 82 अपॉन 2 म्हणजे किती येणार? 41. 41 ऑलरेडी आहे आपल्याकडे. म्हणजे आता 40 म्हणजे काय येणार? 4.0. बरोबर. म्हणजे आपला OC किती आला? 4.0 म्हणजेच 4. एवढं कळलं? OC इज 4. ओके. ही मेथड कळली ना? ऑड नंबर अपॉन 2 टू द होल स्क्वेअर प्लस मायनस 1 हे काय असतं? पायथागोरियन ट्रिपलेट. ओके. हियर वी हॅव टू फाइंड आउट what we have to find out? Area of rhombus. First tell me this first diagonal is 1.8. Now see this second diagonal. This OC is 4. जरा OC 4 असेल तर AC किती असणार आहे? त्याच्या डबल असणार. बरोबर. and therefore I write AC is equals to 2 into 4, that is 8 centimeter. Okay, 8 centimeter. Then we have to find out the area of rhombus. How to find out area of rhombus? Area of rhombus is equals to half into diagonal 1 into diagonal 2, that is product of the diagonals. Okay, area of rhombus is equals to, formula is half into diagonal 1 multiply by diagonal 2. Okay, that is the formula for area of rhombus. Half into diagonal 1 into diagonal 2. Now tell me diagonal 1 is half into diagonal 1 is 1.8. See here it is 1.8. Diagonal 1 1.8 and diagonal 2. Diagonal 1 is 1.8 and diagonal 2 is 8. Now see here 2 1s are 2 and 2 4s are 8. That is 1.8 multiplied by 4. 18 4s are 72. That is 7.2 centimeter square area. Area is always in centimeter square. Okay. Now see what is your answer. See, answer is option number 1, 7.2 square centimeter or centimeter square. Either you have to write square centimeter or write in this way, centimeter square. Okay. Now see next question. The area of rhombus is 24 centimeter square. The length of one of its diagonal is 6 centimeter.
find the length of other diagonal. Now see, very easy. Area is given, okay, length of one diagonal is given, and we have to find out length of other diagonal. We know area of rhombus formula is half into diagonal 1 into diagonal 2, okay. Now see, our formula is area of rhombus is equals to half into product of diagonals, half into d1 into d2, but area of rhombus is given, that is 24, okay. 24 is equals to half into diagonal 1 is given, diagonal 1 is how much? Diagonal 1 is 6, that is 6 multiply by d2 means what? Diagonal 2. Now see here, 2 1 are 2, 2 3s are 6. How to find out d2? d2 is equals to 24. This 3 multiply gets divide, 3 1s are 3 8s are, that is length of second diagonal is 8 centimeter, okay. Very easy problem. Now see, your answer is option number first, 8 centimeter. Now see, next question is a floor of hall 20 मीटर इन लेंथ. एक हॉल का फ्लोर है वो 20 मीटर इन लेंथ, ओके. लेंथ कितना है उसका? 20 मीटर. एंड 17 मीटर इन ब्रेड. ये ब्रेड कितना है? 17 मीटर. मीन्स ऐसा ये हॉल है, बराबर. लेंथ कितना है? 20 एंड ब्रेड है 17 मीटर. इज इट राइट? देन इज टू बी टाइल. टाइल का मतलब इसको टाइल लगाना है. हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ हाफ मीटर विल बी रिक्वायर्ड फॉर टाइलिंग द फ्लोर ऑफ द हॉल. मीन्स हाफ मीटर का एक टाइल, ऐसा अगर हम टाइल लगाएंगे तो कितना टाइल लगेगा ये पूरा हॉल को टाइलिंग करने के लिए, ओके. नाउ उसी हॉल का लेंथ कितना है? 20 और ब्रेड कितना गिवन है? 17, ओके. ब्रेड इज 17, दैट इज गिवन, ओके. नाउ हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेड. तो लेंथ कितना है? 20, ब्रेड कितना है? 17, ओके. 20 मल्टीप्लाई बाई 17, 7 टू द 34, दैट इज 340 मीटर, ओके. दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अभी इसमें टाइल बिठाना है हॉल में. कैसा टाइल बिठाना है? उसका लेंथ भी हाफ है, ब्रेड भी हाफ है. दैट मीन्स टाइल्स इज ऑफ स्क्वायर शेप. ये टाइल जो है वो कौन सा शेप का है? स्क्वायर शेप का है. तो इसका एरिया क्या आएगा? स्क्वायर का एरिया. एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला? साइड स्क्वायर, ओके. फॉर्मूला इज साइड स्क्वायर. साइड कितना है हमारा? हाफ है. तो हाफ का स्क्वायर, हाफ स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ओके. दैट इज स्क्वायर मीटर. ये भी किसमें है? मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर. रिमेंबर, यूनिट इज स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर, वॉट एवर इट इज. नाउ अभी कितना टाइल बैठेगा ये निकालना है. तो हम क्या करेंगे? ये 340 को, हॉल के एरिया को 1 टाइल के एरिया से क्या करेंगे? डिवाइड. तो कैसा आएगा आंसर? 340 डिवाइडेड बाय 1/4, दैट इज 340 मल्टीप्लाई बाय, ये 4 ऊपर जाएगा ना, तो 4/1 मीन्स 340 मल्टीप्लाई बाय 4. ये अपना क्या आएगा आंसर? अगर ये मल्टीप्लाई करते हो आप तो आंसर आएगा 1360 मीटर स्क्वायर, मीन्स 1360 मीटर स्क्वायर. दिस इज योर लास्ट आंसर, ओके. सी योर आंसर इज 1360, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. और ये क्वेश्चन कभी पूछा था? 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है. द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस. अभी पेरीमीटर गिवन है. हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 into side. You know formula for perimeter of rhombus is 4 multiplied by side, okay. Now here perimeter is given. Perimeter is 52. Now I write here 52 is equals to 4 multiplied by side. Is it right? Now tell me how to find out side. Side is equals to 52 divided by 4 and answer is 13, okay. Side is 13. Side of rhombus is 13. Okay. Now what is given? Diagonal 1. That is one of its diagonal is given. Suppose this diagonal is given. Diagonal 1 is equals to how much? That is 24 given. Okay. 24. That is also given. Diagonal 1 is 24. Now see, we know that diagonals of rhombus bisect each other at right angle. ये तो आपको मालूम है, इसके पहले हुआ है. डायगोनल ऑफ रोम्बस
bisect each other at right angles, and therefore this angle O is, suppose this is O is 90 degree. Okay, now see this DB is, this diagonal is 24, then OB is how much? OB is equals to, what is OB? OB is half of DB, is it right? Half of DB. OB is half of DB. Half of DB means half into here, half multiply by DB is 24, that is 12. 12 कसा आलं? 2 1 जा 2 12 जा. Okay, this OB is equals to 12. OB is equals to half of DB. आता OB 12 आहे, हा 13 आहे, बरोबर. मग एकतर पायथागोरस ट्रिपलेट बाय असेल तर घ्या, नाहीतर मी काय सांगितलंय बघा, इवन नंबर असताना काय करायचं सांगितलं होतं, आठवत आहे का? इवन नंबर असताना काय सांगितलंय? किंवा 5 12 13 पायथागोरियन ट्रिपलेट. 5 12 13 इज द पायथागोरियन ट्रिपलेट्स. बघा हा अँगल AOB काय आहे? राईट अँगल आहे, अँड देअरफॉर वी हॅव टू यूज हिअर पायथागोरस थेरम और बाय पायथागोरस ट्रिपलेट. दिस AO इज हाऊ मच? 5. 12 13 आहेत, म्हणजे इथे काय नाही आहे? 5 नाही आहे, बरोबर. म्हणजे AO किती आला आपला? 5 आला. जर का AO 5 आहे तर AC किती येणार? AC, हाऊ टू फाइंड आउट AC? AC इज इक्वल्स टू 5 into 2 because double, that is 10. AC is 10. That means D2 is equals to 10 and D1 is equals to 24. Diagonal 1 is 10, 24 sorry, and diagonal 2 is 10. Then we have to find out area of this rhombus. How to find out area of rhombus? Area is equals to, formula is area. What is formula area? Area is equals to half into diagonal 1 into diagonal 2, that is half into diagonal 1 is 24 and diagonal 2 is 10. Okay, now see here 2 1 जा 2 12 जा 2 12 जा 24, 12 10 जा, answer is 120 square. What is that? Square meter, centimeter. What is given? Centimeter. That is 120 square centimeter. That is the area of rhombus. Okay, very easy. Now see your answer is 120 square centimeter. Option number first. Now see next question is, this figure is to be colored. What will be the expenditure at the rate of 15 per meter square? Okay, आता ही फिगर कशी आहे बघा. दिस इज राईट अँगल, दिस इज स्क्वेअर, अँड दिस below figure is trapezium. Okay, we have to find out area of this triangle, then area of square and area of trapezium, and add these three area. Okay, very easy. Now see in this figure, this near below part, हा खालचा जो पार्ट आहे तो काय आहे? ट्रॅपेझियम आहे, बरोबर. Now this middle part is square, and you know all the four sides of squares are congruent. Therefore this is 4, this is also 4, and this is also 4. All the sides are 4 4 4. Now how to find out area of trapezium? Half into sum of parallel sides. Parallel sides means this 8 plus 4. Okay, sum of parallel sides 8 plus 4 into height is, height of this trapezium, that is given 5. Height is 5, that is given. Okay, now see half into 8 plus 4 is 12, multiply by 5. Okay, now 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. Now 6 into 5, that is 30 square centimeter. Okay, 30 square centimeter, that is area of this trapezium. See, area of this trapezium is 30. I write 30 simply. Then area of square, how to find out area of square? Area of square formula is side square. Now your side is 4, that is 4 square, and 4 square is 16 square centimeter. This area middle part is 16. Is it right? Then now we have to find out area of this triangle, this upper triangle. This angle is 90 degree. Okay, this is 90 degree. How to find out area of this triangle? Area of triangle is equals to half into base into height. Base is 4 and height is 3. Now 2 1 जा 2 2 जा, that means 2 3 जा 6 square centimeter.
this area is 6. How to find out this area of figure? Area of figure is here 30 plus 16 plus 6. 6 plus 6, 12, 1 carry, 3 plus 1, 4 plus 1, 5, that is 52 square centimeter. That is your last answer. Okay, very easy. First find out area of this trapezium, then square, and then this triangle. Okay, then see what is asked. What will be the expenditure at the rate of 15 per meter square? अभी इसको expenditure निकालना है, ठीक है. How to find out expenditure at the rate of 15 per square meter? How to find expenditure? Expenditure is equals to this 52 multiply by 15. Okay, 52 multiply by 15, and answer is rupees 780 is your last answer. We have to find out expenditure for coloring this figure, that is rupees 780. Here rupees 780, option number 1 is your answer. Okay, understood? Next question is, the length of rectangular garden is 452 meter. Length is 452 and breadth is 322 meter. Remember, breadth is 322 meter. There is a parallelogram. There is a parallelogram, broad road. इधर क्या है? ब्रॉड रोड है. अराउंड दिस गार्डन, ये गार्डन है और ये गार्डन के बाहर क्या है? एक रोड है, ऐसा पैरेलल रोड, ठीक है, गार्डन के बाहर. फाइंड द एरिया ऑफ रोड इन स्क्वायर मीटर. ये रोड का एरिया निकालना है. ये बाहर का जो रोड है ना, इसका एरिया हमें क्या करना है? निकालना है. अभी ये जो पार्ट है ना रोड का, ये पार्ट देखो, ये पार्ट क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा ना, बराबर है. देखते हैं कैसा करना है ये. अभी देखो इसमें ये जो हमें गिवन है PQRS, लेंथ इज 452, ब्रेड्थ इज 322. ओके, इसके बाहेर हम क्या बना रहे? याच्या बाहेर आपण काय बनवतो आहे? रोड बनवतो आहे. मग आता रोडची हे काय दिली त्यांनी? 11 मीटर दिलाय. मग इकडे 11 मीटर आणि इकडे पण 11 मीटर, म्हणजे बघा या साईडला 11 मीटर लेंथ इन्क्रीज होईल आणि इकडे पण ह्या पहिली जी लेंथ आहे या रेक्टँगलची, त्याच्यापेक्षा 11 मीटर लेंथ काय होईल? गार्डनपेक्षा इन्क्रीज होईल. म्हणजे ह्या लेंथमध्ये 452 मध्ये आपण काय मिळवणार? 11 प्लस 11. अँड देअरफॉर आय राईट फॉर रोड न्यू लेंथ इज इक्वल्स टू 452 प्लस 11 प्लस 11 एंड दैट इज 474 मीटर. सिमिलरली ये जो ब्रेड्थ है वह कितना है? 322 मीटर. इसमें भी फिर देखो इधर 11 और इधर 11, तो 11 प्लस 11 ऐड होगा, तो कैसा आएगा? न्यू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 322 प्लस 11 प्लस 11 दैट इज 344 मीटर. ओके, अभी हमें रोड का, खाली ये रोड का लेंथ निकालना है. तो क्या करेंगे हम? देखो ये बाहर का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे, उसमें से अंदर का रेक्टेंगल का एरिया क्या करेंगे? माइनस करेंगे. दैट इज एरिया ऑफ रोड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस ABCD माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. ओके, अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? हम आपको मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ये स्मॉल लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एल कितना है? देखो बड़ा लगा 474, ब्रेड कितना है? 344. आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू लेंथ इंटू ब्रेड माइनस ये देखो 452 इंटू 322, तो इधर क्या आएगा? 452 मल्टीप्लाई बाय 322. इफ वी मल्टीप्लाई दिस 474 इंटू 344, then your answer becomes 16. Here answer is 163056. Okay, we have to multiply yourself, and 452 multiplied by 322, answer is 145. See, answer is 145,544. Okay, that is your answer. Then if we subtract this 16 30 56 minus 14 55 44, then your answer becomes 17,512 स्क्वायर मीटर. ओके, एरिया इज इन स्क्वायर मीटर. तो ये समझा आपको कैसे निकाला? क्या किया हमने? बाहर के रेक्टेंगल के एरिया से अंदर का रेक्टेंगल का एरिया क्या किया है? माइनस किया. क्यों माइनस किया? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रोड. सी दिस रोड, ये रोड का एरिया निकालना है, इसलिए मैंने क्या किया? बाहर का रेक्टेंगल माइनस अंदर का रेक्टेंगल. दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स already done in standard 7 also. Okay,
ये पार्ट 3 में हम इधर ही रुकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इसके आगे का क्वेश्चंस पार्ट 4। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना आपके फ्रेंड को, ठीक है।